हेलो एंड वेलकम टू BITV। और अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं महाराष्ट्र के पुणे शहर में, और वहां पर मैं आपको मिलाने वाला हूं नेशनल मेगा माइंड शो के इंटरनेशनल स्पीकर मिस्टर लोगान नायडू जी से। मिस्टर लोगान नायडू जी साउथ अफ्रीका से हैं और इस वक्त लोगान नायडू जी आए हुए हैं पुणे में, और मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे मिला जाए। ये एक अपॉर्चुनिटी है, बार बार तो आने वाले नहीं है वो, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए और उनसे मिलकर नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में कुछ बातें की जाए। क्या वो वहां पर स्पीच देने वाले हैं, किस प्रकार से स्पीच देने वाले हैं, मैंने सोचा थोड़ी सी और जानकारी उनसे लेते हैं। कोई प्रोफेशनल मीटिंग नहीं है, ये बहुत ही कैजुअल मीटिंग होने वाली है और ये सारी चीजें हम उनसे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं लोगान नायडू जी के यहाँ पर पुणे में। अब हम आ गए हैं मिस्टर लोगान नायडू के यहाँ पर, और मैंने उनसे कहा था कि इस इंटरव्यू को हम थोड़ा कैजुअल बनाएंगे। So here we have Mr. Logan Naidu. Hello sir, how are you? I'm excellent. How are you, Ranjit? I'm also fine, thank you. Fantastic. So since how many days you are in India now from South Africa? Well, it's in years. It's in a year. Yeah, I moved here in March 2016. So it's over 6 years now. It's 6 years you are here. Absolutely, Super, more than 6 super. years. So what did you like the most in India? Well, the main reason for me coming here, Ranjit, was to study philosophy at the Vedanta Academy. Okay. So you know, the thing about India is it's really deep spirituality. Correct. Right? I mean, this goes back thousands of years, and even Western writers talk about India and its deep roots in spirituality and the knowledge, of course. The Vedas come from India, right? I mean, this is the original knowledge of the world, of the universe, of the individual. So I found that study fascinating, you know, the study of Vedanta, and that was the main thing that attracted me to India. Great, great, great. I think हमारे ऑडियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि साउथ अफ्रीका से मिस्टर लोगान नायडू यहाँ से हमारे वेदांता को सीखने आए हैं, स्पिरिचुअलिटी को सीखने आए हैं। और हमारे इंडियंस जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं यू नो फॉरेन के लोगों से, लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है कि फॉरेन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ की स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग Correct. नो व्हाट यू टोल्ड, Yes. नो वी हैव लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन इंडिया। Of course. पीपल इन इंडियन पीपल्स दे आर fascinated to foreign. Oh, I agree with you. I agree with you. So this is a great thing. Yeah. And I am also a lot of into spirituality. Right. Mr. Logan, I have told many things about you to our prospect audience, Right, insurance advisor. Yeah, But what extra do you want to tell our audience about you, so that when they listen to that, Right. they would like to see you, meet you personally in National Mega Mind All right, Show? okay. So that's a broad question. I think among the things, you know, a couple of things I'll mention. One is that I've been speaking, you know, globally for the last 30 plus years. And, you know, it's taken me to so many countries, extensively in India, South Africa, and then of course I've been to United States. I've spoken in Canada, in the United Kingdom, and Malaysia, Vietnam, you know, so many places. And I've interacted with financial advisors mainly. So my talks were generally to the financial services industry. So in other words, I understand financial advisors on a global level because we've interacted with them. And of course, my 41 years of membership of the $1 Million Roundtable, again, puts you in touch with so many different people. And I've been to like 17 meetings in the United States or Canada. And, you know, the kind of knowledge that I've picked up from there, it's just immense, really. So it would be of value to people, no question about it. Correct. And the fact that I've come to India, as you mentioned in the start, you know, studying this deep knowledge, right, going into the Vedas, the Upanishads, the Gita, and so forth, and extracting everything that's relevant for human beings to function properly today, right? Because they seem to have lost the art of living, right? And this tries to resurrect that, basically. Correct. Yeah. Yes. So what I understood is that we all insurance advisors in India, they are actually in the well.
You know, when you will come, you will show us the ocean actually. Well, I want to basically enable them to realize, because people don't realize this, that they are literally unlimited creatures. Right? Correct. They can achieve literally any goal that they set themselves. Right? There's a process to doing that, and I will cover some of those techniques when we do that Mega Mind show basically. Superb. तो दोस्तों हम जिस कुएं में हैं आज की तारीख में, दरअसल ये हमारे लिए कुआं है, और लोगन नायडू जी को जब हम मिलेंगे तो हमें एक ओशियन देखने को मिलेगा. Mr. Naidu, we call with the theme of this National Mega Mind Show. This program is going to happen in Hyderabad. Yes. We have booked Ramoji Film City there. Fantastic. And the theme is Fly High, Uchi Udan. This is the theme we have kept. Yeah. And what do you think, Mr. Naidu, what kind of problem you are going to solve when you will come in National Mega Mind Show, so that you feel that if this problem doesn't get solved, then people, insurance advisor, financial advisor, they will not fly high? Yeah, that's an excellent question. I think the key thing is that not just insurance advisors, Ranjit, I think people generally have a limited mindset. Correct. Right? They feel that they can only achieve so much and no more. Right? So what I will attempt to do is to get them to understand that the limitations that they set are self-imposed. Right? In actual fact, human beings are unlimited creatures. So we can literally aim significantly higher than we think we can. But you've got to have that belief that you can achieve these higher goals, really. And so the specific techniques, I'll give you one example, which I'll talk about in more detail, is visualization. Right? You can literally visualize yourself achieving anything you want to. So human beings can literally materialize, what they want, basically. But people seem to have lost touch with that idea that they can achieve great things. Human beings have been designed for greatness. Right? As great Michelangelo said, the greater danger for most people is not that their aim is too high and they miss it, but that it is too low and they reach it. So would you rather be here aiming high but missing it a little bit, or setting the goal here and getting more than that? Absolutely correct. You get it? So in other words, we've got to stretch ourselves, and we have the capability, we have the capacity to do that, to achieve greatness. We've been designed to achieve greatness, really. Superb. Yeah. So problem ये नहीं है कि हमारे हमने कोई बड़ा गोल सोचा है और हम उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि हमने छोटा गोल सोचा है और हम उस छोटे गोल को अचीव करके खुश हैं. और यही बात तो थी कि इस वक्त हम एक वेल में हैं, एंड मिस्टर नायडू इज गोइंग टू टेक अस टू दैट ओशियन, एंड ही इज गोइंग टू हमारी मदद करेंगे, हमारी लिमिटेशन को बढ़ाने की मदद करेंगे, और विजुअलाइजेशन की कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हमें बताएंगे. और ये चीजें जो है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम छोटे छोटे टारगेट्स में अटके हुए हैं. ऊंची उड़ान भरनी है तो अपनी लिमिटेशन को बढ़ाना होगा. दैट्स व्हाट मिस्टर नायडू इज गोइंग टू हेल्प अस in National Mega Mind Show. Yes. But one question always comes in my mind, right. Mr. Naidu, that, see, as I said, this event is happening in Hyderabad. Yes, correct. We are expecting people from Assam should also attend, Calcutta also attend, from different part of the country people should come there. Mumbai, Pune, everywhere. Everywhere. Yeah. So this is a kind of international level of event is happening. Right. So, but to attend this kind of event, one has to leave their city and come to another city. For that they have to invest money, they have to invest time also. Correct. What do you think, so whenever insurance advisor or any person attend this kind of big program, so what kind of chemical reaction happens in that too, so that they achieve big in their life? Well, lots of things have gone virtual now, right, Ranjit? People are on Zoom and so forth. And it has its value. So let's not deny that. It's very good, it's very convenient, etc. But you cannot beat
the live events, in other words, where people are attending in person. Correct. It's a completely different atmosphere. I can talk from experience. I mean, I've attended most of my MDRT annual meetings were live, right? I went to United States or Canada, attended these meetings. And for the last couple of years, it's been virtual. Correct. Completely different. Totally different. Because when it's virtual, I mean, you know, you're kind of multitasking while you're watching, you're doing something else. You're not focusing, you're not paying attention. The other key thing, I think, is that, you know, the greatest, I've always said this, the greatest investment any advisors can make is in themselves. Correct. Right? So in other words, when you attend a live, you know, conference like this, you not only listening to the speakers, but you're able to interact with them. Correct. But what we found at MDRT, interaction with the speakers or listening to the speakers is phenomenal. But you get even more value when you interact with your fellow MDRT members from different parts of the world. Correct. Like here, there'll be people from all over India. So in the breaks and in between, I mean, you'll be able to interact with them, get ideas, find out how they're doing their business. And, you know, that alone can help to boost your confidence and get you to set high goals, really. So bottom line I'm saying is that you've got to invest in yourself. I'll give you a practical example. In India, 1996, when I spoke for the first time in Bangalore, right? 1996. Must have been about 300 you know, people attended the Life Insurance Roundtable, LIRT conference there. LIRT, LIRT conference. And a number of delegates, I remember speaking to them after that, they had to spend 1/4, 25% of their yearly salary to attend. That's how relatively expensive it was, right? I mean, you talk to people like R.K. Shetty, he'll tell you 1/4 of his salary had to be paid just for the, you know, registration fee. But when you look at the impact that that meeting had, right? I mean, R.K. Shetty, for instance, is, you know, now top of the table multiple times, achieved, you know, divisional vice president status at MDRT. He's one of the big guys in India. But it started off by investing a big chunk of his income in himself. Same with Lazarus Dias and others. You know, there's about 20 people there qualified for MDRT, right? They had about 1/4 of the production at that meeting in September. And in 3 months, they made up the balance of 100%. So, you know, if you invest in yourself, that's the only guarantee you have that you can succeed in this business, or any business for that matter. I always used to think, Mr. Naidu, how this insurance agent might be thinking, why should I invest this 30,000 rupees? Right. The investment cost is 30,000 rupees for this event. But when I'm hearing this from you that Mr. R.K. Shetty, I know him personally. बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर जो हैं वो आर के शेट्टी को जानते हैं, मिस्टर लाजरस डायस को जानते हैं, और उन्होंने 1996 में अपनी एनुअल इनकम का 25% इन्वेस्ट किया था बेंगलोर में. इसी प्रकार का इवेंट हुआ था. LIT के बारे में हर कोई जानता है. तो उन्होंने 25% उनकी एनुअल इनकम का इन्वेस्ट किया था और उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं. मैंने उनका ऑफिस का वीडियो बनाया, मेड हिज ऑफिस वीडियो. ही हैज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस in the country of all, among the all insurance. I mean, I admire R.K. Shetty. He's done remarkably well. So, you know, that first meeting as at LIRT 96, 97, they called me back. So again, R.K. was there. By that time, I'd got to know him. Whenever I came to India, I used to visit his office in Mumbai, right? And he used to come to my workshops, seminars, and all those kind of things. So, you know, but he's done so well. He's like a role model for financial advisors, I think, really. Super. Yeah. But remember, you start off on a small scale, right? So you've got to start somewhere. So especially the newer advisors, the newer agents, they must understand that when you invest in yourself, then only are you guaranteed to grow. Otherwise, you will stagnate. You will be just where you are. You might be comfortable, but you're not going to get above that level now. So you've got to invest, you've got to learn, you've got to grow, you know, in your knowledge, really. Yeah. Super, great. I think, Mr. Naidu, this video, this interview is going to give a lot of motivation to our listener, and they will get a boost to attain, to register this kind of, you know, this kind of program. So thank you very much, Mr. Naidu, for giving us time. It's my pleasure. Accepting this proposal to become our
speaker. It's an absolute pleasure, Ranjit. Thank you for everything that you are doing also. Welcome, sir. Appreciate it. तो दोस्तों बहुत कुछ आइडिया हमें आज के इस वीडियो से लेना था और बहुत सारा आइडिया हमें मिला भी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, नेशनल मेगा माइंड शो कहाँ होने वाला है, मैंने बताया ये हैदराबाद में होने वाला है, रामोजी फिल्म सिटी में होने वाला है। और रामोजी फिल्म सिटी में ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। इसमें हमारे साथ में इंटरनेशनल स्पीकर है, नेशनल स्पीकर है, बहुत बड़े लेवल पर हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं। एक दिन का हमने फन इवेंट भी रखा है वहाँ पे, यानी कि पूरी रामोजी फिल्म सिटी का हमने टूर रखा है। बहुत वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है ये। एक दिन का पूरा हमने वहाँ का हाफ डे का टूर रखा हुआ है। इसके अलावा 2 दिन बहुत सारी लर्निंग होगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ में मिलने का मौका मिलेगा। इस पूरे इवेंट का कॉस्ट 3 दिन का ये इवेंट है, ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर, पूरे 3 दिन का हमने अरेंज किया हुआ है वहाँ पे। तो इस 3 दिन का इवेंट का जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 30,000 होगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, BITV का एक वीडियो मेकिंग प्रोजेक्ट है जो कि पूरे 1 साल का है। इसमें हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस वीडियो मेकिंग प्रोग्राम के, उनको हम वीडियो कंटेंट कैसे बनाना है वो बताते हैं। इसमें हम उनको वीडियोस कैमरे के आगे बात कैसे करना है वो सिखाते हैं। हर महीने हम उनके एक वीडियो को रिलीज करते हैं। BITV खुद उसको एडिट करता है, BITV के चैनल पर हम उसे पब्लिश करते हैं। हर वीक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। ऐसे पूरा साल भर चलता है और पूरे साल भर में 12 प्रोफेशनल वीडियो हम उसे पब्लिश करके देते हैं। और 12 महीने के बाद में वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, एक प्रोफेशनल वीडियो ट्रेनर बन जाता है। तो और ये जो प्रोग्राम है, ये साल भर का जो प्रोग्राम है, इसका नाम ARN है और इसका चार्ज हमने 60,000 रुपीज रखा हुआ है। अब 2 चीजें मैंने आपको बताई, एक तो नेशनल मेगा माइंड शो है जिसका चार्ज 30,000 है, एक ARN वीडियो मेकिंग प्रोजेक्ट है जो साल भर का है जिसका कॉस्ट 60,000 है। हमने इन दोनों को मिलाकर एक पैकेज बना दिया। ये जो 90,000 रुपीज के जो 2 प्रोग्राम है, इसको हमने एक पैकेज बना दिया है। देखिए, अगर आप ये दोनों चीज को ले लेते हैं तो आप जो है अपने बिजनेस में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज तो मिलेंगे आपको। एट द सेम टाइम आप बहुत सारे लोगों तक वीडियोस के द्वारा पहुंच सकते हैं, लेकिन 90,000 रुपीज का पैकेज शायद आप इमीडिएटली स्टेप ना ले सकें, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक आइडिया देता हूं। अगर आप ये 90,000 रुपीज का पैकेज अपने जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस, उस कंपनी के सेल्स मैनेजर से आप बात कीजिए, उस कंपनी से बात कीजिए, उनको बोलिए कि आपको ये जो पैकेज है वो आपको स्पॉन्सर करे, BITV का ये पैकेज आपको स्पॉन्सर करे। तो हम, अगर आपकी कंपनी ये पैकेज स्पॉन्सर आपको करने के लिए तैयार है, तो हम आपकी कंपनी को ये एक पैकेज 90,000 में नहीं, 60,000 रुपीज में हम उनको देंगे, अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं तो तो इससे उस कंपनी को भी फायदा है, आपको भी फायदा है। आपका इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया, कंपनी को भी फायदा है, क्योंकि कंपनी को 90,000 की चीज हम 60,000 में दे रहे हैं। हम उन्हें अपने इस इवेंट का स्पॉन्सर बना देंगे। ये जो आपके 12 वीडियो बनने वाले हैं, इस 12 वीडियो में हम उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इस प्रकार के जितने भी नेशनल मेगा माइंड शो के प्रमोशनल वीडियो बनने वाले हैं, हर प्रमोशनल वीडियो में हम उनका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। सो दिस इज आप इसे कह सकते हैं कि ये एक विन विन सिचुएशन है उस कंपनी के लिए भी। अच्छा, आप उस कंपनी को इस कंडीशन पे बोलिए स्पॉन्सर करने के लिए कि आप उनका एक मिनिमम टारगेट अचीव कर देंगे। ये कंडीशन होगी, अदरवाइज वो आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। आप उनको बोलिए कि मैं इतना मिनिमम टारगेट कर दूंगा, या उनसे पूछिए कि कितना मैं आपका टारगेट कर दूंगा तो आप मुझे ये स्पॉन्सर करेंगे। तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उनको उनका टारगेट मिल गया। आपके लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपने जो किया उसका आपको कमीशन मिलने वाला है। और BITV के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। तो आप अपनी कंपनी को अप्रोच करें। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नेशनल मेगा माइंड शो का इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल एडवाइजर्स तक जाना चाहिए इसके लिए। और ये जो ऑफर हमने रखा है, ये जो कॉर्पोरेट प्लान हमने बनाया है, ये तो बहुत विन विन सिचुएशन है। ये जानकारी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप के संपर्क में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, या म्यूचुअल फंड कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं, इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स मैनेजर, उन सभी को ये वीडियो भेजिए, ताकि हर किसी को पता चले। इतने बड़े लेवल के प्रोग्राम के बारे में हर किसी को जानकारी मिले। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके मन में कोई भी विचार है, कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमें लिखकर भेजिए। वो जो विचार है या सवाल है, उसके जवाब हम आपको देंगे। आपके विचार हम तक पहुंचने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि
कि आप BITV इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। कैसे बनेंगे आप BITV इस कम्युनिटी का हिस्सा? तो BITV चैनल को सब्सक्राइब करें और BITV इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। अगले किसी वीडियो में मैं रंजीत सिंह आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।